Hello everyone. Once again, welcome back to Unacademy. So, my dear friends, how are you? I hope all of you are very much fine and working hard for the GATE 2021. And those who are in second year or the third year, they are looking for the GATE 2022 and 23. So let's crack GATE ESE with India's largest online learning platform, and that is nothing but a Unacademy. So, my dear friends, get the plus subscription now and start accessing unlimited live and the recorded video lectures by the India's best educators. So there is a great announcement, great. From today, this is the time, and the Unacademy has already launched parallel to me a new batches for the mechanical engineering student. That is the batch A by the India's top educated. I hope most of you people know about the like Kulkarni sir, Jitendra Gill sir, Rajiv sir, and these are the faculty who will take your classes for the new batch GATE 2022. So don't be late. Join now in this wonderful platform. So myself, Ajay Das, I am MTech in Computer Science. I have a 8+ year of teaching experience, and till now I have trained almost 20,000 engineering parents for the GATE and PSUs. Work as a freelancer at many reputed institutes of India. Also qualified the GATE exam 5 times. Qualified the Chhattisgarh State Electricity Board exam with the AIR 8. So, dear students, download the Unacademy Learning app and start your journey with the most trusted organization in the institute's field, that is the Unacademy. So, what you will get, this is the major question which always used to arise before taking the subscriptions in everyone's minds. So, let me tell you, I have just written some formal things that you are going to have once you will take the subscription. The first one is the daily life classes, second one is the structure courses, third one is the live test and quizzes, fourth one is the unlimited access. So, these are the basic things that you are getting just after taking the subscriptions. Might be you are thinking, sir, this is the normal thing which every online platform basically provide. What is special about you? So this is the things. Learn with the top educators. So I have mentioned some of the educators, those who are associated with the Unacademy from electrical, electronics, civil, similarly from the mechanical and electrical. If you want to know more about the educators, what you can do, you can download the Unacademy Learning app and you can check the profile of each and every educators. Also, you can access the free special class conducted by each and every educator. That is also live. So after getting the full satisfaction, you can go for the subscription. And my dear friends, let me tell you one thing. I'm just writing a word, that is the iPhone. So if you want to get the subscription, you can use the same code IFA, and or if you want to access the free special class of any educators, also you can use the same code, that is the AIEF. As we know, under the GATE ESE there are various branches, but I have listed only those branches over here for which the Unacademy is preparing you for the GATE as well as for the ESE. So like the mechanical, computer science, general aptitude, electronics, chemical engineering, mathematics, instrumentation, civil engineering, electrical engineering, production and industrial engineering. So these are the branches for which you can easily opt the subscription for the GATE and ESE. But if you want to get the subscription, my dear friends, there are two different subscription model. There are two different subscription model. The first one is the plus subscription. The first one is the plus subscription, and the second one is the iconic. The second one is the iconic. Okay, so you can look upon over here, like if you want to go for the plus, first of all I will explain you about the plus subscription, then we will move to the iconic, which is recently launched by the Unacademy. So in the plus subscription, if you want to take the subscription for the 1 month, then this is the fee structure. For the 3 months, 14,715. For the 6 month, 24,715. And for the 12 month, it is a 30,250. Similarly, this is for the 18 month, this is for the 24 month. But in all the situations, suppose you are taking the subscription for the
12 month and you are applying the code IFA over here. So once you will apply this code, you will immediately get minimum 10% discount, and this is the final fee structure just after the discount. Got it. Similarly, you can go for the 18-month or 24-month of subscription in case of Plus. But what about the Iconic? So Iconic is the new subscription model developed by the Unacademy recently from the past 2 months. There are only two subscription model available. One is the 12-month, second one is the 24-month. For the 12-month of subscription, your fee will be around 50,000. For the 24-month, it will be around 74,000. But my dear friends, in both the situation, once you will apply the code IFA, you will get immediately 10%. That is the minimum 10% discount, and your final applicable fees will become 66,600 for the 24-month, and this is the for the 12-month. Got it. One more thing, let me tell you, if you are taking any kind of subscription at least for the 6 month, at least 6 months means either 6, 12, 18 or 24 month, then no EMI cost is chargeable. Means first thing, you can pay your fees in a EMI form, and if you are taking a subscription for at least 6 months, then none of the EMI cost will be applicable to you. Got it, all of you. So this is the second subscription model, which is the Iconic. Now you might be thinking that, sir, between the Plus and Iconic there is a fee difference of almost 40%. Almost how much? 40%. Why? So let's see why in a Iconic you need to pay a little bit more fees in comparison to the Plus. So just see over here. If you are getting a subscription for the inside the Plus, then these are the things which you will get. The first one is the India's best educators, second one is the interactive live classes, third one is the structured courses and PDF, fourth one is the live test and quizzes. So these are the basic things which you are getting in the Plus subscription. But what about the Iconic? So all the things that you are getting in the Plus, definitely you will get in the Iconic. But these are some additional things which you will only find in case of Iconic kind of subscription. And the best part of this is the personal coach, that you can choose your personal coach with whom you are feeling more comfortable. See, जब कभी भी आप कोई भी पर्सनल कोच, सपोज देयर आर 20 number of educators in a computer science, and suppose by one of them you are feeling much comfortable in the subject knowledge and with in respect to the problem solving, in respect to the doubt solving, what you can do, you can choose the same educator as your personal coach who will assist you further to solve your problem, to clear your doubts, and also will keep you motivated till your GATE exam. Means you can interact with directly with the faculty until your GATE exam is completed. Got it? So this is the best part that we are going to have in case of Iconic subscription. The second best part is the preparatory study material. My dear friends, in the Plus you are not going to have a study material, but if you are getting a subscription in Iconic, then you will get the study material. Got it? And the third one is the personalized test analysis. Means whatever the test you are appearing for, your test will be evaluated and you will be intimated personally. And also you will get some guidance that where you need to improve yourself, where you need to put your more efforts, all those things, ताकि टाइम टू टाइम आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाए, अपने आप को जज कर पाए, समझ पाए कि मुझे जो एफर्ट है वो किस डायरेक्शन में, किस तरह के एफर्ट के साथ हम लोग को डालना है. अरे गड़ी मामा. सो द थर्ड वन इज द स्टडी प्लानर. You can also will guided how to plan your study. So these are the additional things which you are getting only in the Iconic, and that's why you need to pay 40% more fees, and which also you can pay in a EMI form. Got it? So this is the difference. So my dear friend, let me tell you one more thing. See, whatever the code I have written over there, iForm, you can apply this code to get the minimum 10% discount. But most of the students have a confusion that sir कि ये कोड क्या सिर्फ गेट ईएससी के लिए ही एप्लीकेबल है या गेट ईएससी में सिर्फ कंप्यूटर साइंस के केस में है? नहीं,
आप इस कोड को गेट ईएसी के किसी भी ब्रांचेस के सब्सक्रिप्शंस के लिए यूज कर सकते हैं. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज द सेम कोड इज एप्लीकेबल टू टेक एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन. either either it is a UPSC, CAT, JRE, and SSC, JE, IIT, JE, whatever the courses you want to look for, or your some of the friends, colleagues, or relative are looking for, and if those are available in Unacademy platform, you can apply this code in all the situations. So please note it down so that in the further future you can apply this code. Got it, everyone? Now let's come to the subject. So this is the slogan of the Unacademy, because we believe we will prepare you in such a way that you would be able to crack your exam in a first attempt. So, my dear friends, theory of computation part 10. And today I am going to talk about the push down. So, let's start. क्योंकि मजेदार टॉपिक है तो समझने का कोशिश करते हैं. तो चलिए देखिए, अगर हम लोग लैंग्वेजेस की बात करें, ठीक है ना, इफ यू विल टॉक अबाउट द लैंग्वेजेस, so languages are defined with respect to the machine. already i have told you already i have told you that every machine has some computational power. Every machine has some computational power, okay, and depending upon those we basically divide it. See, suppose these are the problem which can be solved by the n. After that there is a machine PDA, then there is a machine LPA, and then there is a machine that is the Turing machine. So there are some problem which can be solved by the DFA, and also there are some problem which can be solved by the PDA, and there are some problem which can be solved by the LBA, and there are the problem which can be solved by the Turing machine, and there are the some problem which cannot be solved by any of them machine. So this kind of problem is called the unsolvable problem. So depending upon, so you can see over here, the computational power of the Turing machine is higher than the linear bounded automata, is higher than the push down automata, and is higher than the DF. So these are the order of computational power. So अलग अलग मशीन के कंप्यूटेशनल पावर के कारण लैंग्वेजेस भी अलग अलग डिफाइन होते हैं. तो चलिए इस बात को समझते हैं. तो देखिए, जो भी लैंग्वेजेस को डीएफए सॉल्व करता है उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज. बेसिकली से रेगुलर लैंग्वेज, and the problem solved by the PDA is called the context free language, and the problem solved by the LBA is called the context sensitive language, and the problem solved by the Turing machine is called recursive and recursively enumerable. Okay, the problem solved by the Turing machine is called the recursive and recursively enumerable. So these are the languages computed by the different machine. These are the languages computed by the different machine. So already we have learned how to design a DFA for all regular languages. And already we have seen what are the context free languages inside the grammar. But still, I will tell you some of the things about the languages. Then we will come to the PDA. Okay. So see over here. See, if how to write the context free grammar. How to write context free grammar. जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होते हैं उसका बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का जो बेसिक सिंटैक्स होता है वो ये होता है कि वेरिएबल टू एनीथिंग, वेरिएबल टू एनी
thing. So this is the formal definition that I am giving to you. Variable to any thing. Or what you can write a to n plus t whole star, where a belongs to, okay, these are the definition written inside the, okay, these are the definition where t is equal to set of terminals and n is equal to set of non-terminals, non, and already you know that the set of terminals are indicated by the small letter, are indicated by the small letter, and the set of non-terminal is are indicated by the capital, okay, capital. Clear everyone? Means left hand part of the production rule will contain only one non-terminal, and it can derive any combination of terminals and non-terminal. Take an example. Take an example. Suppose I am considering A to B C and B to BB slash epsilon and C to A C C slash A C. So if I am writing this kind of grammar, you can see over here the left part of the production rule. See, these are the production rule. The left part of the production rule is containing only one non-terminal, and the right hand side could be a combination of terminal or non-terminals. Means right hand side of the production rule कुछ भी हो सकता है. ये पूरा का पूरा टर्मिनल्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है या नॉन टर्मिनल का कॉम्बिनेशन हो सकता है या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है. Whatever it could be. Are you getting my point or not? Whatever it could be. So if this is the grammar G, then the language generated by grammar G is known as context free language. अब इस ग्रामर से जनरेट होने वाले लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. And already we know there exists a machine PDA for every context free language. There exists a machine PDA for every context free language. Got it? So here my question is how to design a PDA. How to design a, okay, fine. Let's see. See, पीडीए का फुल फॉर्म होता है पुश डाउन ऑटोमेटा. पुश डाउन that is the PD, okay, and there are two different type of push down automata. One is the PDA by final state. The second one is the PDA by empty store. Okay, please try to understand what is the meaning of PDA by final state and the PDA by empty store. Okay, fine. See over here, PDA by final state. तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि suppose this is the input tab, okay, and inside the input tab these are the input string, okay, and this is the finite state machine. So this is the basic diagram of any machine, and there is a stack,
And what is the initial stack symbol? The initial stack symbol we basically considered a Z naught. Okay, we will scan the input from left to right. See, I'm considering there is an input A1, A2, A3 up to dot 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 AN. So in place of string W, we are considering A1, A2 dot 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 AN. So scan the input from left to right, and after the complete scanning in this point, after the complete scanning, if we are reaching to the final state, QF means final state, final state, then accept the string, then accept the string, otherwise reject. Okay, so whatever the, after the complete scanning, whatever the content of the stack is, suppose this is the alpha, we are not bothered about this. After the complete scanning of the input, whatever the content of the stack is, we are not bothered about it. But if we are reaching to the final state, if we are reaching to the final state, then the string will be accepted. This is the meaning of PDA by final state. Similarly, PDA by empty store. PDA by empty store means, suppose this is the input offer, okay, and we are scanning from left to right, and this is the finite state machine, and this is the stack. So initial stack symbol is Z naught. So if there is a string A1, A2 up to dot 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 AN, so after the complete scanning, if store of the stack is empty, store of the stack is empty, then accept, then accept, otherwise means the acceptance of the string will be checked by the store of stack. Means in this case, in this kind of machine, there is no final state, no final state. Are you getting my point or not? तो पीडीए बाय फाइनल स्टेट के केस में दो तरह का स्टेट होगा, फाइनल स्टेट, नॉन फाइनल स्टेट. और पीडीए बाय एम्प्टी स्टोर के केस में देयर विल बी नो एनी फाइनल स्टेट. तो किसी भी स्ट्रिंग के एक्सेप्टेंस को चेक करने का तरीका क्या होगा कि अगर स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद स्टैक का जो स्टोर्ड है वो एम्प्टी हो जाता है, देन इट विल बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज नो. So applying this concept, we will try to construct the PDA for the different languages. So let's try to understand. Let's try to understand. I'm just taking a very simple example. See, first of all, we are just looking upon the PDA by final state. PDA by final state. Suppose I'm considering a language L is equal to a to the power n, b to the power n, where n is greater than equal to, we know this is the context free language, this is the context free language. और किसी भी context free language के लिए PDA डिजाइन करना easy होता है. Now let's try to understand what kind of string this language is containing. That is the AB, A square, B square, and so on. So before designing a PDA, always try to look upon what is the minimum length of the string the language is containing. So this is the minimum length of the string that the language is containing. So looking upon this, you have to apply some logic. Looking upon this, you have to apply some logic. So let's see over here. Let's see over here. And see, first of see what will be our logic for designing a PDA. तो देखिए, अगर सपोज हम लोग एक स्ट्रिंग एज्यूम कर रहे हैं डबल ए डबल बी, तो यहां पर देखो कि जितने भी इस लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स हैं, इन सारे स्ट्रिंग्स में
ए और बी का काउंटिंग सेम है, मीन्स एनी नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय सेम नंबर ऑफ बी, यस और नो। यहां पर देखो डबल ए देन डबल बी, अगर ट्रिपल ए है तो ट्रिपल बी भी होगा, फोर ए है तो फोर बी भी होगा, मीन्स द काउंटिंग ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, द काउंटिंग ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। एंड व्हाट इज द इनिशियल टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल, दैट इज द जीरो। तो लॉजिक हमारा क्या है, लॉजिक ये है कि वॉट एवर द काउंटिंग ऑफ ए इज, मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द ए, अगेन वी विल रीड द ए। तो अगर हम लोगों ने दो ए को रीड किया है तो दो बी भी रीड होना चाहिए। तो दो से या तो अधिक या सो कम बी रीड होता है तो वो स्ट्रिंग उस लैंग्वेज का नहीं होगा, मीन्स मशीन से क्या होना चाहिए, रिजेक्ट होना चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन यू वंस मोर। See, if we are reading two number of A, then exactly two number of B should be read. अगर 3B रीड होता है तो भी स्ट्रिंग रिजेक्ट होगा, अगर 1B रीड होता है तो भी स्ट्रिंग रिजेक्ट होगा। द रीजन इज those string does not belongs to the language. Suppose I am considering a string, A to the power 2, B to the power 3. This string does not belongs to the language L, so this string should be rejected. Are you getting my point or not? But if you are considering a string a square b square which belongs to the L, so this should be, sorry, this one is the b square, so this should be accepted. Are you getting my point or not, all of you? So applying the same thing, you have to basically think about the logic. So just see over here. तो फंडा क्या है and what is the use of the stack over here is, suppose if we are reading a single A, then corresponding to the A, we will push a stack symbol X into the stack. मीन्स जितने भी ए रीड हो रहे हैं इसके काउंटिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, कहां पर, स्टैक के थ्रू। इसके थ्रू, स्टैक के थ्रू। तो अगर सिंगल ए रीड हो रहा है तो एक्स पुश होगा, फिर से ए रीड हो रहा है एक्स पुश होगा। मीन्स अभी स्टैक में कितने सिंबल है, दो सिंबल है, तो इसके बाद दो बी से ज्यादा बी रीड हो ही नहीं सकता। अगर हो रहा है तो स्ट्रिंग हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। मीन्स after that if you are reading the single b it will be pop, again we are reading the single b it will be pop. It is representing, and there is a z naught, it is representing the equal counting of a and b has been read. a और b का equal counting read हो चुका है। अब इसके बाद क्या read होगा, if there is a nothing then there is a epsilon, means if we are reading the epsilon and top of the stack symbol is z naught, then accept. Then accept means we are reading the epsilon, top of the stack symbol is z naught, then move to the final state. Move to the final state. Are you getting my point or not? So this condition at the last moment you have to apply, and this is the ultimately logic. यहां से हम लोगों ने क्या किया है, लॉजिक डिफाइन किया। अब इस लॉजिक के थ्रू we will try to design a EFA. So let's try to see how to design a EFA. See, this is the initial state, you know, and think, always remember the minimum length string. See, अगर a रीड हो रहा है, ठीक है ना, इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि रीडिंग क्या हो रहा है। अगर a रीड हो रहा है, कॉमा, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में क्या है, z naught। तो अगर a रीड हो रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में z naught है, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंसर्टिंग x into the stack. So the next stack symbol will be the x z naught. So my dear friends, you can easily visualize from this part we are just indicating content of stack, content of stack. Got it everyone? So अगर a रीड हो रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में z naught है, तो x z naught मींस x को पुश कर देना है। दूसरा सिचुएशन क्या है, a रीड हो रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में क्या रहा होगा, x, तो फिर से x इंसर्ट करना है।
तो अगर ए रीड हो रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में एक्स है, मतलब ए से पहले ए रीड हुआ है, फिर से आपको क्या करना है, एक्स इंसर्ट करना है। नाउ उसके बाद क्या चांसेस है बी रीड होने का, तो बी अगर रीड हो रहा है तो टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में डेफिनेटली क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दैट इज द ए बी। मीन्स कोई भी बी तभी रीड होगा, बी तभी रीड होगा जब उससे पहले क्या रीड हुआ है, ए रीड हुआ है। और अगर ए रीड हुआ है तो टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में डेफिनेटली क्या होगा, एक्स होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर हम लोग बी रीड कर रहे हैं तो डेफिनेटली बी से पहले ए रीड हुआ है, मीन्स टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में वी शुड एक्सपेक्ट द एक्स। सो इफ देर इज एक्स देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पॉप इट। सो इसका मतलब क्या है, इस बेसिकली सेंटेक्स का मीनिंग क्या है, मीन्स पॉप टॉप ऑफ स्टैक सिंबल, टॉप ऑफ स्टैक सिंबल। सिर्फ आपको स्टैक के टॉप सिंबल को पॉप करना है, मीन्स अगर टॉप सिंबल एक्स है तो उसको मैंने पॉप कर दिया, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग द एप्सिलॉन। वी कैन नॉट इंडिकेट द एंटायर स्टैक थ्रू द एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब ये नहीं होता कि पूरा का पूरा स्टैक एम्प्टी हो गया, इसका बेसिकली मीनिंग होता है कि सिर्फ टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल को हमने क्या किया है, स्टैक से बाहर पॉप कर। नाउ फ्रॉम द क्यू नॉट वी आर माइग्रेटिंग टू द Q1। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि बी ही रीड होगा, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में एक्स होगा, तो उन सारे एक्स को पॉप कर दे। मीन जितने ए का काउंटिंग रीड हुआ है उतने ही बी का काउंटिंग रीड हो गया। अब टर्मिनल सिचुएशन क्या होगा कि हम लोग एप्सिलॉन रीड कर रहे हैं और टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में क्या है, जेड नॉट। मीन्स वी आर रीडिंग द एप्सिलॉन and there is a Z naught on the top of the stack symbol, then do not do push pop operation and just migrate to the final state. Just migrate to the final state. Now take an example. Suppose if you are considering a string double A ट्रिपल बी, सी ओवर हियर अगर ए रीड हो रहा है टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में जेड नॉट है तो मैंने एक्स पुश कर दिया, फिर से ए रीड हो रहा है एक्स पुश कर दिया, फिर से बी रीड हो रहा है तो एक्स को पॉप करना है, प्लस स्टेट ट्रांजिशन हो रहा है, दैट इज द Q1 स्टेट। मीन्स यहां तक पे हम लोग Q0 स्टेट पे थे, ठीक है ना, और इस बी पे जब ये बी रीड हो रहा होगा तो हम लोग Q1 स्टेट पे है। तो Q1 स्टेट पे जब बी रीड हो रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में एक्स है, इसको भी मैंने पॉप कर दिया। फिर ये कहां पर रीड हो रहा है, Q1 स्टेट पे। तो Q1 स्टेट में अगर बी रीड हो रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में जेड नॉट है, तो वी डू नॉट हैव एनी ट्रांजिशन। सी सी व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स if we are in the Q1 state, we are reading the B and top of the stack symbol is Z0. There is no transition, no transition. Q1 state पे B reading पे क्या decision होगा? Nothing is given. If nothing is given, then the string will be rejected. This string will be rejected. This string will be rejected. Means if decision cannot be taken by the PDA, by the push down automata, definitely puja, definitely don't worry, there is a very small concept I will talk about this just after this, okay? Okay, just see over here. तो यहां पर क्या है कि if for any input reading, if the PDA is not able to take any decision, then the string will be rejected. Means in this sense, this string will be rejected. Clear, everyone? Now, now I'm just making a little bit changes. I'm just making a little bit changes. Okay, suppose I'm giving you an example number. See over here. Suppose the language is given as
a to the power n where n is greater than equal to 0. Union a to the power n b to the power n where n is greater than equal to. Design a PDA. Design a PDA. Okay. See यहां से अगर हम लोग सेट ऑफ स्ट्रिंग देखें तो सेट ऑफ स्ट्रिंग एप्सिलॉन भी हो सकता है, इसको आप देखो, सिंगल ए हो सकता है, डबल ए हो सकता है, एंड सो ऑन. एंड सिमिलरली इट कुड बी ए बी, a square, b square, and so on. So all the string generated by this and all the string generated by this union of this means इन दोनों के string का set हमने create कर दिया. You need to design a PDA such that all these strings will be accepted by your machine. So how to design a PDA? How to design a PDA? तो PDA by final state के बारे में मैंने आपको अभी क्या बोला था कि PDA by final state का मतलब होता है whatever the content of the stack is after scanning, after the complete scanning, if we are reaching to the final state, after the complete scanning, if we are reaching to the final state, whatever the content of the stack is, the string will be accepted. The string will be accepted. Let's try to understand. See, this is the Q naught state, and we are reading A. Suppose we are reading A, top of the stack symbol is Z naught. Then insert X. And if we are reading A, top of the stack symbol is X, then again insert X. And then if we are reading B, top of the stack symbol is X, then just pop it and migrate to the Q1. Again, if we are reading B, top of the stack symbol is X, then pop it. And the terminal situation is if you are reading nothing, that is the epsilon, top of the stack symbol is Z naught, then do not do anything and just move to the final state. So just see over here. Suppose I am considering a string W is equal to triple A. So whenever I will read A, top of the stack symbol is Z naught, we will insert X, again X, again X. So after the complete scanning, here the scanning will be completed. इस point पे scanning complete हो जाएगा. So after the complete scanning, these are the content of the stack. But after the complete scanning, in this point, we are reaching to the final state. Yes or no? We are reaching to the final state. तो मैंने आपको अभी क्या कहा कि स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद स्टैक का कंटेंट कुछ भी हो, वी आर नॉट बॉदर अबाउट दिस. बट इफ वी आर रीचिंग टू द फाइनल स्टेट, देन द स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड. तो ये स्ट्रिंग हमेशा हमारा क्या होगा? एक्सेप्ट होगा. This string will always be accepted. Got it, everyone? And similarly, means single A, double A, triple A, any counting of A can be accepted by this. Since initial state is the final state, so the epsilon will also be accepted. Now, if you will look upon the entire machine, this particular string will be also accepted. Just see over here. If I am considering double A, double B. So whenever I am reading A, X, B, pop, again B, pop, there is a epsilon, move to the final state. Move to the final state without altering the content of the stack. Clear, everyone? So I hope this particular fundamental thing is clear to all of you. Okay, now let's come to the another problem. And this is the question of GATE 2016. See,
I'm considering the example number. Suppose the language is given as this: L is equal to a to the power n b to the power m, where n is greater than n is greater than m, or you can just say greater than equal to. Okay, so you can see over here what kind of string this language will contain. It can contain epsilon, it can contain ab, it can contain double ab, it can contain double a double b, it can contain triple ab, and so on. Means the counting of a either can equal to b or it can be greater than b. So you need to design a PDA for this kind of strings. So just see over here. This is the initial state here. Now, you can just see over here. Just see. If we are reading a, top of the stack symbol is x, then double x. And if we are reading a, top of the stack symbol is z0, then x z0. Now, if we are reading b, top of the stack symbol is x, then pop it and move to the final state. Move to the final state. Okay. Now, if what I can say, again see over here. If we are reading b, top of the stack symbol is x, then just see over here what kind of strings it is accepting. See, if I am giving ab, if I am giving ab, then it will be accepted. Yes or no? See over here. If I am giving ab, it will be accepted. See, reading a, top of the stack symbol is z0, we are inserting a x, and b popping x, and we are reaching to the final state, means it will be accepted. Similarly, double a b, we are reading a, we are inserting x, again a x, again b, just pop it, and we are moving to the q1 state. So on the complete scanning, we are reaching to the final state, so it will be accepted. तो यहां पर हर तरह का स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है, यहां पर हर तरह का स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है, a square, b square and so on. All the strings are accepted except the one string, that is the epsilon. epsilon एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो उसको लिए मुझे क्या करना है? तो अगर epsilon रीड होता है टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में, डेफिनेटली z0 होगा, तो उसको z0 से रिप्लेस करना है. जस्ट माइग्रेट ओवर हियर, just migrate over here, and this one will become the final PDA for the language. This one will become the final PDA for the language. Got it, everyone? Now let's come to the another. Now just see. Suppose I am giving you another problem. L is equal to a to the power n, b to the power n, c to the power I, where n is greater than equal to 1 and I is greater than equal to 0. So what kind of string this language will contain? It can contain ab, a square, b square and so on. Similarly, abc, a square, b square, c and so on. Similarly, ab, c square, a square, b square, c square and so on. So these are the strings which this string is containing. Here I is equal to 0, in this situation I is equal to 1, in this situation I is equal to 2.
So if we are making I is equal to 0, this part of string will be generated. If you are making I is equal to 1, all these strings will be generated. If you are making I is equal to 2, all these strings will be generated, and so on. But out of which, what is the minimum length of the string? Minimum length of the string is, see what kind of logic you need to apply. You have to think about equal number of A and B. Means counting of A and B are dependent, but the C is independent. So thinking about this, you need to design a PDA. Think about this, you need to design a PDA. So just see over here. See, this is the Q state. We are reading A. We are reading A, top of the stack symbol is Z0, then X. We are reading again A, top of the stack symbol is X, again this is the double X. We are reading B, definitely top of the stack symbol should be X, so we will pop it. This is the Q. You can consider this is the Q0. Again we are reading B, top of the stack symbol is X, then we are popping this. See. Now, what are the situation? What are the situation? See, there could be a situation we are reading C and top of the stack symbol should be a Z0. Then it could be a Z0. And at the last movement, we are reading epsilon and top of the stack symbol is Z0. Then we are just replacing it by Z0 and we are moving to the final state. Final state. We have just made a little bit change in the previous solution. We have just made a little bit change in the previous solution. Just see over here. Suppose if we are considering a string w is equal to a square b square. Okay. So this is nothing but double a double b. So once you will ignore this string will be accepted. But if I am considering a next string, that is the w is equal to ab double c. So see over here, if we are reading a, top of the stack symbol is z0, then x will be inserted. We are reading b, x will be pop. We have migrated this state. Again we are reading c, top of the stack symbol is what? Z0. So if you are reading c, top of the stack symbol is Z0, then do not do anything with the stack. Do not do anything with the stack. Again we are reading C, top of the stack symbol is Z0, we will never do anything with the stack. And at the last time we are reading the epsilon and top of the stack symbol is Z0, then we are moving to the final state. It means this string is accepted. Means all the string belonging to this languages will be accepted by this PD. So this one will become the final. This one will become the final. Is that clear? All of you. Now, see. I'm considering the next example. That is the example number 6. Suppose it is given as L is equal to A to the power n, B to the power m, and C to the power n plus, where nm greater than equal to C. This is the context free language. Why? There are two different reasons. The first reason is we can construct PDA, and the second reason is we can write context free. सो इन दोनों ही सिचुएशन में अगर आप या तो आप पीडीए डिजाइन कर पा रहे हो या तो आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख पा रहे हो,
if if you are able to do any one of these things, then you can easily claim that the given language is context free. Please remember this. Okay, please remember this. So how to claim about a language whether it is a context free or not? You can just go for this. Either you can design a PDA, or you can write a context free grammar. So just see over here, इस लैंग्वेज को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, तो कैसे लिख सकते हैं? ए टू द पावर एन बी टू द पावर एम अगेन सी टू द पावर एम अगेन सी टू द पावर एन, वेयर एन एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जस्ट लुक अपॉन ओवर हियर। यहाँ पर देखिए इन दोनों का काउंटिंग सेम है और इन दोनों का काउंटिंग सेम है। मीन्स यू हैव टू राइट अ ग्रामर सच दैट first of all counting of a and c equal counting of a and c will be generated. So how to write a grammar? ग्रामर कैसे लिखेंगे? तो s2 a s c, तो रिकर्सिवली ये जितने बार कॉल होगा a और c का इक्वल काउंटिंग जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और इस s को हम लोग किससे रिड्यूस करें? दूसरे नॉन टर्मिनल से, सो दैट all combination of BC will be generated. And what is the boundary condition is given? It is given as greater than equal to 1. Means at least the list string of this language will be a B double C. So at least AC का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? C. So whenever I am reducing the non-terminal S by the non-terminal A, it is carrying the pair of A and C, क्योंकि ये हमारा लिस्ट स्ट्रिंग है। Now how the A can be reduced? How the A can be reduced? To see over here, from the non-terminal S we will generate this, and from the non-terminal A we will generate the equal counting of B and C. So what we will write? B A C, and ultimately it will be a C. So now you can see over here, this is the final grammar. This is the final grammar for the above language. So see, minimum string क्या generate हो रहा है? S2 A C and A to B C. So here the minimum string is A B double C. इसके बाद जितने भी स्ट्रिंग्स हैं जो हमारे इस लैंग्वेज में बिलोंग कर रहे हैं, all those strings can be generated. You can check it over here. So या तो आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख दो या तो आप पीडीए डिजाइन कर दो। तो पीडीए डिजाइन करने का भी फंडामेंटल थिंग्स क्या होगा? लेट्स सी ओवर हियर। नाउ लैंग्वेज L is equal to A to the power n, B to the power m and C to the power n plus m, where nm greater than equal to 1. So what we can write? We can write A to the power n, B to the power m, again C to the power m, again C to the power, where nm is greater than equal to. So how to design a PDA? तो देखिए सबसे पहले A रीड होगा, तो A के लिए मैंने X सिंबल को पुश कर देंगे, क्योंकि A का काउंटिंग मैच होना है C के काउंटिंग से। उसके बाद B रीड हो रहा है, तो B के लिए मैंने Y को पुश किया, B के लिए मैंने Y को पुश किया। अब क्या हो रहा है? अगर C रीड हो रहा है तो जितना C रीड होगा उतना Y पॉप होता रहेगा, जितना C रीड होगा उतना क्या होता रहेगा? Y पॉप होता रहेगा। अगेन यहाँ पर जितना C रीड होगा उतना X पॉप होता रहेगा। तो देखिए डिपेंड करता है कि क्या दो स्टैक सिंबल चाहिए, स्टैक सिंबल चाहिए कितना। तो या तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर A रीड हो रहा है X को पुश करते चले, B रीड हो रहा है फिर भी X को पुश करते चले, और C रीड हो रहा है तो X को पॉप करते चले। Can we do this? The question is, can we do this? Means suppose we are considering a string W is equal to, first of all let's try to find out the logic. A B B then C C C.
ओके, सो ए के काउंटिंग के बराबर एक सी है, डबल बी के काउंटिंग के बराबर डबल सी है। अब हम लोग सिंगल स्टैक सिंबल पे काम कर रहे हैं। ए रीड हो रहा है, एक्स मैंने पुश कर दिया, अगेन बी रीड हो रहा है, एक्स मैंने पुश कर दिया, अगेन बी रीड हो रहा है, एक्स मैंने पुश कर दिया। अब ये सी रीड हो रहा है, पॉप, सी रीड हो रहा है, पॉप, अगेन सी रीड हो रहा है, पॉप, लास्ट में एप्सिलॉन रीड हो रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में जेड नॉट है, एक्सेप्ट। फाइन, दिस कॉन्सेप्ट इज फाइन, बट देर इज सम प्रॉब्लम विद दिस कॉन्सेप्ट। तो देखिए इस प्रॉब्लम में, इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत कहाँ आने वाली है। अगर हमने कोई स्ट्रिंग ले लिया w इक्वल टू ए बी ए सी सी सी, दिस स्ट्रिंग डज नॉट बिलोंग्स टू द लैंग्वेज एल, बट अगर हमने इस स्ट्रिंग को फीड किया तो देखिए ए रीड हो रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में जेड नॉट है, तो मैंने यहाँ पर एक्स पुश कर दिया, अगेन बी रीड हो रहा है, एक्स पुश कर दिया, अगेन ए रीड हो रहा है, एक्स पुश कर दिया, सी रीड हो रहा है, पॉप, सी रीड हो रहा है, पॉप, अगेन सी रीड हो रहा है, पॉप। तो ये भी क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो जा रहा है, ये भी क्या हो जा रहा है, एक्सेप्ट हो जा रहा है। लेकिन जबकि इसको क्या होना चाहिए था, दिस स्ट्रिंग शुड बी रिजेक्टेड बिकॉज दिस स्ट्रिंग डज नॉट बिलोंग टू द लैंग्वेज एल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ऑल ऑफ यू? सो यू नीड टू थिंक अबाउट दिस कि अगर कोई भी स्ट्रिंग लैंग्वेज में बिलोंग कर रहा है तो ही वो एक्सेप्ट होना चाहिए, अदरवाइज वो रिजेक्ट होना चाहिए। तो ये लॉजिक हमारा यहाँ पर काम नहीं आ रहा है। ये वाला जो लॉजिक है, सिंगल स्टैक सिंबल का जो लॉजिक है, ये हमारा काम नहीं आ रहा है। लेकिन क्या स्टेट ट्रांजिशन करने पे कोई फर्क पड़ेगा? आई एम जस्ट कंस्ट्रक्टिंग टू डिफरेंट पीडीए एंड यू जस्ट टेल मी विच वन ऑफ द पीडीए इज करेक्ट। ओके, सी स्टेट ट्रांजिशन करने का भी अपना एक बेनिफिट होता है। सी ओवर हियर, आई एम डिजाइनिंग अ मशीन M1। सी, अगर ए रीड हो रहा है, ठीक है ना, अगर ए रीड हो रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में जेड नॉट है, तो ये एक्स जेड नॉट। अगर बी रीड हो रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में डेफिनेटली एक्स होगा, तो एक्स एक्स। अगेन ए रीड हो रहा है, एक्स है तो डबल एक्स। उसके बाद सी रीड हो रहा है, डेफिनेटली एक्स होगा तो उसको पॉप कर। अगेन सी रीड हो रहा है, एक्स है तो इसको पॉप कर। लास्ट में अगर एप्सिलॉन रीड हो रहा है, जेड नॉट है तो जेड नॉट से रिप्लेस करेंगे एंड वी आर मूविंग टू द final state. Already I have told you there is a problem with this kind of DFA. This is not a correct PDA. This is not a correct PDA because whenever I am considering a string ABA triple C, it will be accepted, but it should be rejected. But it should be rejected because this string does not belongs to the language. So this PDA is not correct. Now I am designing another machine with the single stack symbol. यहाँ पर हम लोगों ने सेट ऑफ स्टैक सिंबल में क्या लिया है, तो वी हैव कंसीडर्ड एक्स एंड जेड नॉट। नाउ आई एम ट्राइंग टू डिजाइन द अदर पीडीए। सी ओवर हियर, स्ट्रेट ट्रांजिशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए रीड हो रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में क्या है, जेड नॉट है तो एक्स जेड नॉट। अगेन ए रीड हो रहा है, एक्स है तो डबल एक्स। इसके बाद अगर बी रीड हो रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में डेफिनेटली एक्स होगा तो यहां पर डबल एक्स। अगेन बी रीड हो रहा है, एक्स है तो फिर से डबल एक्स। उसके बाद स्ट्रेट ट्रांजिशन करते जा रहा है, सी रीड हो रहा है, डेफिनेटली एक्स होगा तो ये पॉप होगा। अगेन सी रीड हो रहा है, एक्स है तो ये पॉप होगा। At the last moment, what will happen? Epsilon read हो रहा है, जेड नॉट है तो जेड नॉट, and this will be the final state. So just try to realize the things. See, if I am giving an input A B A triple C in this PDA, this is the machine M2. So what will happen? See over here. अगर हम लोग A रीड कर रहे हैं, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में जेड नॉट है तो X पुश होगा। उसके बाद फिर से बी रीड कर रहे हैं, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल में एक्स है तो एक्स पुश होगा।
और स्टेट माइग्रेशन कहां पर होगा, तो Q0 से Q1 की तरफ होगा। तो Q1 स्टेट में ए रीड हो रहा है, ए रीड हो रहा है, तो कोई ट्रांजिशन है क्या? There is no transition, there is no transition over the input symbol A at the Q1 state, and that's why this string will be rejected. रिजेक्ट होना भी चाहिए क्योंकि ये स्ट्रिंग हमारे लैंग्वेज में बिलोंग नहीं कर रहा है। बट इफ वी आर सप्लाइंग द इनपुट ए बी बी एंड ट्रिपल सी, सो अगर ए रीड हो रहा है, एक्स है, तो मैंने जेड नॉट है तो मैंने एक्स इंसर्ट कर दिया, बी रीड हो रहा है एक्स, अगेन बी रीड हो रहा है एक्स, सी रीड हो रहा है पॉप, अगेन सी रीड हो रहा है पॉप, अगेन सी रीड हो रहा है, क्योंकि ए का रीडिंग और बी का रीडिंग दोनों अलग अलग स्टेट पे है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्टेट पे ए का रीडिंग कंप्लीट करेंगे, दूसरे वाले पे बी का, तीसरे वाले पे सी को थ्रू पॉप करेंगे। तो अगर हम लोग चार स्टेट कंसीडर करते हैं, Q0, Q1, Q2 एंड Q3, then with the two different stack symbol, that is the Z0 and X, it is possible. It is designing a PDA is just for the language I have mentioned over here. इस लैंग्वेज के लिए PDA डिजाइन करना पॉसिबल। Got it? So dear friends, this is not a just end, this is just a beginning. So I have just given you the introductory session about the PDA, how to design a PDA. Tomorrow we will look upon a lot of problem related with the PDA. ठीक है ना, कैसे पीडीए डिजाइन करना है, और भी प्रॉब्लम के डिफिकल्टीज को हम लोग इंक्रीज करेंगे कल के क्लास में, और देखेंगे कि अगर प्रॉब्लम का लेवल थोड़ा और बढ़ाया जाए तो किस किस तरह के क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं। एंड वी विल आल्सो लर्न हाउ टू राइट अ ट्रांजिशन फंक्शन with respect to a particular PDA. And there is one of the student Pooja who have just asked me कि sir how to convert the DFA into a regular expression, किसी भी DFA से regular expression में कैसे convert करेंगे, so also we will look upon this on the tomorrow class. So I hope you people have enjoyed this session. So my dear friends, if you are liking this session, then use the promo code IFOR to get the 10% discount. Okay, so if you are really liking this, then you can subscribe this channel and just press the bell icon button to get all the notification. Don't forget to put your valuable comments, because your one valuable comment will inspire a lot of students, and those will get the motivation to get this to get the chance to join this wonderful platform. Thank you very much. Good night. मस्त रहिए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए. Bye all of you, take care.